Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third session of Medical Research 101. And I'm shortly going to go over the objectives of this session. But as you know from the past sessions, कि आज के सेशन में हम लोग टाइटल बनाना जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था उसमें से टाइटल बनाना और ऑब्जेक्टिव्स निकालने सीखेंगे. So let me just go to my presentation and please keep your microphones off. अपने mute पे रखें. Just a minute, share. All right. So here we are. Let me just go to the beginning of the presentation and let us start now. All right. Um, all right. For those of you, I'm sure all of you know me very well. I am heading an independent initiative called SPIRE, which stands for Social Action for Progressive Innovation, Research and Education. And our latest project is Spire Child. Those of you who are not familiar with Spire are welcome to visit the website and orient yourself with the workings of Spire, which is under Need Foundation, which is a non-profit based in Karachi, Islamabad, and now in Peshawar. So, like I told you last time, we need to come up with a well-scripted research question that forms the basis of the entire research project. The first thing to come out from the research question is the title of that project. And I'll go over a short exercise to show you, how easy it is to extract a title from just a simple research question. आपके सामने मैंने पिछली दफा रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे और आई एम श्योर कि आप लोग you're all intelligent people, आपको समझ आ गई होगी कि रिसर्च क्वेश्चन एक टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनाना होता है. So what you are taught usually is कि टाइटल जो है रिसर्च प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद आता है. But that is something that I don't agree with. और हम लोग एंड में टाइटल को अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जब हमारे पास एक टाइटल आता है तो हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से बना सकते हैं. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवोकेट कि जो आपका टाइटल है वो आप शुरू से ही अपने रिसर्च क्वेश्चन से बना लें, बिकॉज इट विल गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन. Like last night, well, it was night for me, what we were discussing is के पब्लिकेशन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हम उसको पब्लिकेशन के लिए तैयार नहीं कर रहे होते. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. So I'm going to give you a short demonstration now how to derive a working title from the research question. If you remember last time जब हम लोग research question discuss कर रहे थे तो हम लोग meconium stain liquor के ऊपर discussion हुई थी. अब यहाँ पे लोगों ने मुझे अपने रिसर्च क्वेश्चंस भेजे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. बिल्कुल उसी ग्रिड में, अगर आपको याद हो, हम लोग एक मैट्रिक्स में या एक ग्रिड में वो क्वेश्चन लिखते थे एंड देन अ क्वेश्चन वुड कम आउट ऑफ इट कि आपकी क्वेरी क्या है, व्हाट है, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, फिर पैरामीटर क्या है, क्या आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, क्या आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या आप उसकी एक्यूरेसी को देख रहे हैं, किसी एक पैरामीटर को देख रहे हैं, फिर रिसर्च टॉपिक क्या है. आपके सामने रिसर्च टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं: बर्थ एस्फिक्सिया, यूज ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, देन एक्सरे चेस्ट वर्सेस सीटी चेस्ट, किसी के सोचे हुए टॉपिक्स हैं ये. फिर आपकी सेटिंग क्या है, क्या आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं, क्या आप कम्युनिटी में कर रहे हैं, क्या ये एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है. Then how long is your study going to be? That only you know. I mean, we don't know. We cannot make a research question for you. And then, if there's anything else that you need to add in the research question. So for the first query, अगर आप देखें, वो ये है कि, is it more frequent, the birth asphyxia, in home births versus hospital births? And the period of study is 1 year. It is either prospective or retrospective. ठीक है जी. इसका टाइटल जो सबसे सूटेबल टाइटल बन सकता है इस कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया इन neonates born at home versus hospital.
a prospective study. So there, I mean, you have a full title in front of you, जिसमें से आप objectives बना के कल अपनी research शुरू कर सकते हैं. इसी में से आपका research questionnaire बनेगा, इसी में से आपके objectives बनेंगे. बल्कि अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में ये भेजना हो और अभी आपने पूरी रिसर्च नहीं की हुई है, आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, आप इतना ही लिख के एंड में लिख सकते हैं expected results and just write anything there, this is what we expect. We are not sure कि ये results होंगे, but these are expected and we hope to get these results in this time, and you can send the entire abstract to a conference. From where I previously, when I was working in a hospital, वहां पे सबसे बड़ा एतराज लोगों को ये होता था कि अभी आपकी स्टडी पूरी नहीं हुई है तो आप इसको कॉन्फ्रेंस में कैसे भेज रहे हैं. That is not true. People are interested in knowing what new knowledge is. Journals are interested in knowing that. So once you have a title, आपकी रिसर्च के ऊपर काम बहुत तेज हो जाता है और आप you go towards a publication way faster than anybody else. Okay, so the second example that I have here for you is there an association? वो एक association देखना चाह रहे हैं with quality of life, with in patients who are using lipid lowering agents, और वो एक 6 months की observation करना चाह रहे हैं. उनके patients जो हैं वो सारे 65 years and above हैं. And this is a cross sectional quality. किसी का mic on है, please वो off कर दें. It's a cross sectional quality of life project जो वो करना चाह रहे हैं. उनका टाइटल जो आया है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें. Do lipid lowering agents improve the overall quality of life in patients above 65 years of age? So this is a very concise title. इससे पता चल जाता है lipid lowering agents को स्टडी कर रहे हैं, quality of life को स्टडी कर रहे हैं, और 65 and above के patients हैं इस स्टडी के अंदर. So this is how, when you have a coherent and complete research question, you can come up with a title just looking at that question. So the next question that was sent to me is Muhammad Uzair Saab, आपका mic on है. The query is what? Basically वो ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा accurate क्या चीज है, the more accurate diagnostic modality, और फिर वो चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन में एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में. 1 year ड्यूरेशन है एंड वो ये कह रहे हैं कि हमें क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन करना है. So the title for their research will then be comparing the diagnostic accuracy of chest X-ray with CT chest for pulmonary TB, 1 year data from such and such hospital. And there you have a full title. So this is how you derive a title from a well-written research question. आई होप कि जिन लोगों ने अभी रिसर्च क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि कितना जरूरी है एक मुकम्मल और कंसाइज और बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च क्वेश्चन लिखना, और ये एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है. ऑलराइट, सो वंस यू हैव द टाइटल, व्हाट कम्स नेक्स्ट. आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. One is the SMART objectives, and I'm sure that everybody knows about SMART objectives. What are SMART objectives? How do they work? And specific क्या है? You have to stay focused. आपने इधर उधर की बातें उसमें नहीं करनी होती हैं. The objective should be measurable. उसके अंदर एक क्वांटिटी होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव ये कहे कि मुझे ये चीज मेजर करनी है. ये रिसर्च मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला पैरामीटर मेजर करना है. It should be achievable. It should not be an impossible objective. For example, to say that I'm going to do such and such thing in 1,000 patients in 1 month. That will make it not achievable. Then it should be relevant. जो आपका टाइटल है जो हमने अभी अभी आपके सामने बनाया है, आपका ऑब्जेक्टिव उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए. Your objective should not be something that is not included in the original title of the study. And then time limited, जैसे हम हर एक research question में कहते हैं for 1 year, for 6 months, for 3 months. So
the objective is achievable only if it is time limited. अगर ऑब्जेक्टिव खुद ये कह रहा है कि मैं इतने अरसे में इन्होंने मुझे अचीव करना है, ओनली देन इट्स अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. ओके, दिस वाज स्मार्ट ऑब्जेक्टिव इन अ नटशेल. और ये दिस इज अ मेट्रिक दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू नो आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव थ्रू योर रिसर्च. What kind of contribution do you want to make? I want to increase the maybe the knowledge of students. I want to decrease the frequency of a certain disease or a certain side effect, or I want to improve the quality of life. So that is the first thing. जो verb आप लिखते हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव में आखिर करना क्या चाहते हैं, काम क्या है आपका. फिर आपका एक आउटकम होगा कि आप क्या है, आप आउटकम क्या अचीव करना चाहते हैं. जो आप सपोजिंग यू राइट इम्प्रूव इन द फर्स्ट वन, what do you want to improve? Is it an understanding of the subject? Is it a knowledge? Is it an attitude? Is it, do you want to bring about a behavioral change? So what is the outcome that your objective is aimed at? एंड हाउ मच, आप कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं. 6 महीने में आप 100% इम्प्रूवमेंट शायद नहीं ला सकते, बट यू मे राइट दैट आई वांट टू सी अ 30% इम्प्रूवमेंट फ्रॉम टाइम ए टू टाइम बी. Starting of the study to the end of the study, I want to see this much improvement. That is an amount. And then, of course, the end of study or the end of the term of your research is the date. तो इन इन मेट्रिक्स के अंदर जब आप एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होता है. एंड मोस्ट जर्नल्स विल एक्चुअली, जब आप जर्नल्स में लिख रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं, most journals will tell you that we need your objectives to be written in the smart format because they're used to seeing that format. Now in medical research, smart objectives abhi tak chal rahe hain, koi masla nahi hai. However, the structure of objectives is changing. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है, और उससे जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये है दैट नाउ द एकेडेमिया और द रिसर्च the research sorority or the society is ready for a new format of objective writing, and that is the fast goals. अब ये जो है, ये मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है हमारे पास बाय द वे एमबीए लोगों से आती हैं, जिन्होंने एमबीए किया होता है या एमपीएच किया होता है या वो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में होते हैं. सो दिस इज एमआईटी स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू, बहुत ही एक प्रेस्टिजियस इदारा है, जिन्होंने एक रिसर्च की थी कि क्या वाकई स्मार्ट गोल स्मार्ट हैं, आर दे रियली वर्किंग. And they came up with fast goals. ये डोनाल्ड एंड चार्ल्स सल, ये दो रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है कि ये ओरिजिनल आर्टिकल उनसे आया था और ये 2018 में आया था. That they said कि फास्ट जो है, जिसका मतलब है F means frequently discussed. आपका ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज होना चाहिए जो बहुत से लोग डिस्कस करते हैं, जो सब लोगों की का एक कॉमन कंसर्न है, तभी आपका वो ऑब्जेक्टिव कामयाब होगा. देन इट इज एम्बिशियस. स्मार्ट में है ना, वो आपको कहते हैं स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, तो वो आपको बड़ा छोटा थोड़ा लिखने पे मजबूर करते हैं. आप एक जगह पे आपको पता होता है मैं 50% काम तो कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं, आप उसको 30% कर देते हैं. यू वांट टू प्लेस सेफ. आप एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखते हैं जो आप समझते हैं कि मैं इसे 100% अचीव कर लूंगा. अगर मैंने 30 के बजाय 50% लिख दिया और मैंने सिर्फ 45 अचीव किया, इसका मतलब है कि मैं तो कम हो गया, मैंने तो अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया. सो व्हाट डोनाल्ड एंड चार्ल्स सल सेड कि नहीं, आप एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स लिखें. एक तो वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड हो और दूसरा वो एम्बिशियस हो. डोंट वरी, उनका स्कोप जो है वो हाई हो. अगर आप समझते हैं कि आप 50% काम कर सकते हैं, आप उसमें 55-60% लिखते हैं, नो प्रॉब्लम. ओनली इफ दे आर मेजर्ड बाय स्पेसिफिक मेट्रिक्स. जब आप एक गोल लिखते हैं कि 1 साल के एंड में मैं 100 स्टूडेंट्स को ये चीज पढ़ा चुका हूंगा या ये चीज सिखा चुका हूंगा,
तो फिर आपने लिखना है कि हर 3 महीने के बाद मैं अपने आप को चेक करूंगा कि मैंने कितने लोगों को ये चीज सिखा दी है। सो इट इज रिटन विद इन द ऑब्जेक्टिव कि आप अपने आप को चेक कैसे करेंगे। जैसे जो इंटरम गोल्स जो होते हैं या जो आपके आउटकम इंडिकेटर्स हैं, उनमें एक तो अल्टीमेट आउटकम इंडिकेटर्स होते हैं, एक आपके इंटरम इंडिकेटर्स होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज भी उनको कहते हैं। और अब ये मेडिकल रिसर्च में भी एंटर हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ स्मार्ट गोल्स कर सकती थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन आई थिंक फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन फास्ट गोल्स को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस हेयर। और उसके बाद एक चीज जो स्मार्ट गोल्स में नहीं थी, वो ये ट्रांसपेरेंसी थी। फास्ट गोल जो है वो आपने लिख के दीवार पे लगा देना है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट माय टीम टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट माय ऑर्गेनाइजेशन टू डू। कि सबकी मोटिवेशन एक जैसी हो, सबके गोल्स एक जैसे हों, और वो सारे एक फोकस्ड एफर्ट कर रहे हों। दैट आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ फास्ट गोल्स, क्योंकि मैं I've always written smart goals, fast is very new for me. But I think the best aspect of fast goals is that it is transparent for everybody to see. And that is something जो smart goals में नहीं था. So that is all I wanted to tell you. And this you can refer to yourself. ये इसके अंदर मतलब व्हाट डज इट मीन कि फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड क्या है, एम्बिशियस क्या है, स्पेसिफिक क्या है, ये ओरिजिनल आर्टिकल से मैंने निकाल के आपके लिए यहाँ लगाया है। और ये बहुत काम की चीज है। आप अपने पर्सनल गोल्स भी अगर लिख रहे हो, ये चीज आपके बहुत काम आएगी। यू कैन जस्ट राइट अ पर्सनल गोल, आई वांट टू बी अ पीएचडी एट द एंड ऑफ 2 years or 3 years, and you can write that goal in the fast format, and I think you will see it getting fulfilled. There is a lot of promise in fast goals. Okay, so this is what they said. This is from the original article. ऊपर जो लिंक दिया हुआ है वो ओरिजिनल आर्टिकल का, और ये आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर होगी। सो गोल्स कैन ड्राइव स्ट्रेटजी। एक स्मार्ट गोल जो है ना, वो तो सिर्फ ये बताता है कि मैंने ये करना है। फास्ट गोल जो है वो आपको ये बताता है कि मैंने ये करना है और ये मैंने ऐसे करना है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसर्च में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अपना गोल लिख रहे हो उसके साथ ही आपको अपनी स्ट्रेटजी पता हो। दिस इज हाउ आई वांट टू डू इट, दिस इज हाउ आई वांट टू अचीव इट। मैं ये रिसर्च डिजाइन मुझे चाहिए है, ये वाला रिसर्च टूल मुझे चाहिए है, शायद ये सॉफ्टवेयर चाहिए है, शायद ये वाला स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने वाला मुझे ये स्पेशलिस्ट चाहिए है। सो राइट एज यू आर, अभी आपने प्रोजेक्ट लिखना भी नहीं शुरू किया, अभी आपने डाटा कलेक्शन नहीं शुरू की, आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखा है, आपने टाइटल लिखा है, और अब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, और आप ऑलरेडी आप रिसर्च डिजाइन पे पहुंच गए हैं। This is how I want to do this research. So that is the beauty of writing good objectives. Even smart objectives में भी आपको clearly अपनी strategy नजर आ जाती है। मैं retrospective जाना चाहता हूँ, do I want to go back in time, या prospective जाना चाहता हूँ, मैं I want to follow forward in time, I want to do a prospective study, or I want to take a cross section in time and I just want to see this time now, और इसके ऊपर मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसे जितनी हमारी केस सीरीज हैं या केस रिपोर्ट्स हैं वो क्रॉस सेक्शनल होती हैं, वो आज हो रही हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें नोट करके पब्लिश कर रहे हैं। सो केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर क्रॉस सेक्शनल। उसके बाद आपके कोहॉर्ट्स आते हैं। Retrospective, I want to go back, I want to review medical data, I want to review medical records, और मैं कुछ स्टडी करना चाहता हूँ। And then there is prospective, I want to go forward in time. मैं आज मरीजों को एनरोल करके इनको फॉलो करना चाहता हूँ कि कल, परसों, तरसों और 1 महीने और 3 महीने बाद इनके साथ क्या होगा। So this is the beauty of a well-written research question. Once you have that, उसकी वो मेंटल एक्सरसाइज से ही और 1-2 मीटिंग्स आप अपनी टीम के साथ करें, एंड यू हैव द टाइटल, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथोडोलॉजी जो आपने रिसर्च में इस्तेमाल करनी है। एंड नॉट ओनली दैट, यू आल्सो नो द टूल्स दैट यू नीड, आपको चाहिए क्या है वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए।
So that is, if we understand that, and we enable each other to write effective research questions, there is no question कि हम research कर सकते हैं कि नहीं. Of course हम बहुत अच्छी research कर सकते हैं. Okay, so now, what is the meaning of all this? अब आप पहुंच भी गए हैं और आपने objectives भी लिख लिए हैं, ने सारा कुछ मुकम्मल कर लिया है. बेसिकली आपकी जब जब ये सारा कुछ आप कर चुके होते हैं, आपके सामने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं. What do I want to achieve from this research? I want to reduce the infant mortality rate. I want to improve the maternal mortality in my country, in my hospital, in my city. I want to improve the knowledge level of young professionals about research. So, आपका एक आपकी प्रायोरिटीज आपके सामने खुल जाती हैं. आपको ये पता चल जाता है कि आपने एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ करनी है. टाइम कहाँ नहीं वेस्ट करना, टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है. क्योंकि ये मैं हर वक्त अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखो, वक्त ना जाया करो, वक्त बिल्कुल ना जाया करो, अदरवाइज वक्त तुम्हें जाया कर देगा. So don't waste time because time will waste you. Then very briefly, from objectives to the research design. ये एक स्लाइड, आई एम रिपीटिंग दिस स्लाइड, ये पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ. वी हैव केस रिपोर्ट्स, वी हैव क्रॉस सेक्शनल सर्वेज, केस कंट्रोल स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडीज. और कोहॉर्ट्स जो हैं that are going back in time or going forward in time actually end up into experimental studies. उसके बाद फिर हम इंटरवेंशन करना सीखते हैं. अगर हमने कोई टेस्ट करना है और फिर फॉलो करना है, अगर हमने कोई दवाई देनी है और फिर फॉलो करना है, these are quasi experimental studies, interventional studies that lead to randomized control trials. और शुरू में मैंने आपको ये बताया था, एक आपकी गलतफहमी मैंने ठीक की थी कि आपको हर कोई कहता है कि केस रिपोर्ट और तुम ये क्यों लिख रहे हो, केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज लिखने का क्या फायदा है. जब तक आपके पास केस रिपोर्ट नहीं होगी, आप इनमें से किसी और डिजाइन में नहीं जा सकते हैं. आप खुद एक केस रिपोर्ट छापें और आप खुद उसको फॉलो करें टिल यू रीच अ स्टेज जहां पे आप उस केस रिपोर्ट वाले डिसऑर्डर पे या इशू के ऊपर एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करें. आप देखिए, रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइट हो रहे हैं, लोग आपका रेफरेंस दे रहे हैं. सो अगर आप खुद ही एक अथॉरिटी हैं और आप वो स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद आप उसी स्टडी की बेसिस पे अपनी रिसर्च को डेवलप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यू कैन इमेजिन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू विल बिकम एन अथॉरिटी ऑन दैट टॉपिक. वर्सेस ये करना कि एकदम से किसी के दोस्त के या किसी सीनियर के या जूनियर के आरसीटी में जाके कूद जाना और उसको कहना कि इसमें मेरा नाम भी डाल दो. So I'm really sorry, but this is what is happening all around us. And we are not getting anywhere. We are not going to get any results from this. Until and unless हम एक केस रिपोर्ट के लेवल से शुरू करके आरसीटी के लेवल तक खुद फॉलो करें. That is when the artificial intelligence and the search engines, and that is when Google is going to tell the world that, Dr. Such and such is an authority from KP or from Karachi, somewhere in Pakistan, on this topic. That is, what will matter in the long run. So this is it. This is all I had to share today. This was a very dense session. इसमें बहुत सी information थी. Inshallah, next Friday session 4 करेंगे, जिसमें एक 250 वर्ड का इंट्रोडक्शन आपने लिख के लाना है विदाउट रेफरेंसेस. जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर एक मजमून लिखना है. याद है आपको जब मैट्रिक एफएससी में बचपन में मजमून लिखा करते थे, राइट एन एसे ऑन माय स्कूल, ऑन मॉर्निंग वॉक, माय बेस्ट फ्रेंड. रेफरेंस तो नहीं इस्तेमाल करते थे ना, खुद एक लिखते थे उसके ऊपर, माय बेस्ट फ्रेंड इज whoever, and he or she is very nice and very sweet, and we go to school together and we take our lunch together. खुद एक मजमून लिखते थे ना. सो अब आपने जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है उसके ऊपर आपने खुद से
एक मजमून लिखना है, ठीक है, 250 वर्ड लिमिट है, खैर है 300 वर्ड्स हो जाएं, लेकिन इससे कम ना हो। और याद रखें, रेफरेंस नहीं डालना उसमें, जो आप सोचते हैं उसके बारे में या सोचती हैं वो लिखना है, रेफरेंस नहीं। रेफरेंस की एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह विल बी द लास्ट सेशन ऑफ 101, और उसमें आई विल शो यू हाउ टू रेफरेंस योर राइटिंग। वो बस एक लास्ट एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आपके पास एक रेफरेंस इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है जी। So this is, I think, this is about all. I will stop screen sharing now. I will basically just take your questions if you have any questions, because we have time. I thank you very much for your attention, and I'm here to take questions. I'm here to take comments. Or you can type your question, क्योंकि चैट में आप टाइप करके भेज सकते हैं if you are not comfortable talking online. Okay, I will try my best to upload the video. I've recorded it successfully. But अब मुझे इसका आगे मुझे कुछ नहीं करना आता. There are technical people actually. So thank you so much. And yeah, thank you, Shima. I hope that inshallah, you will get ahead in your research. Okay. So Zia, uh, data entry and result. Yeah, that will come. That will come later. Okay. Yeah, Zia, I'll unmute you. Go ahead. हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। Walaikum Assalam. थैंक यू मैडम, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। जब ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे तो इसकी कोई लिमिट है, कितने मैक्सिमम या कितने मिनिमम कितने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? इस बारे में Okay. थोड़ा सा गाइड कीजिए। Yeah, it's a very good question. Very good question. Most of Pakistani journals, I don't know why, ये आदत उनको कहाँ से पड़ी है, लेकिन they are fixed on 3 objectives. जरूरी नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस मैंने देखी हैं जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, and then I have seen researches जिसमें 7 objectives होते हैं. So it depends on the scope of your project, and it depends on how you have phased those objectives. जो fast objectives मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इसके साथ जब ये फैशन में आ जाएंगे, जब ये हमारे जर्नल्स को पता चल जाएंगे कि अब तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, तो यू विल सी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इसमें इंटरम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फेज के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो देयर इज रियली नो लिमिट. लेकिन पाकिस्तानी जर्नल्स, बल्कि कुछ इंडियन जर्नल्स में भी, they like 3 objectives. Somehow they just like this number, but there's no limit. Okay, so if there are no more questions, I think we are done here. It's actually Juma time here. So I think we did it in time this time. हमें जल्दी नहीं करनी पड़ी. Thank you so much. And I hope that we will be able to share the recorded session with you. My email is available to almost all of you. My WhatsApp number is available. Next Friday, inshallah, will be the last session. And if you come prepared with a written essay, I think that will, हाँ, 10 मिनट का मार्कर अब शुरू हो गया है. That's okay. I'm not going to upgrade no matter what you say. So next time, inshallah, there'll be a demonstration. That will not be a PowerPoint. I don't like PowerPoints actually, लेकिन चूंकि ये share करना था, next time सारा एक practical demonstration होगा, and most welcome. Thank you. I'm going to stop recording now. All right.